connected with education and literature, know him as a teacher, a mentor, a motivator, a guide, not only for specifically literature and subjects, but how to understand students, how to understand how to teach. And he has always been a stepping stone for us to move forward in life, and has always stood by us and always never forgotten us. And सर इन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ बोला था जब मैं उनके बारे में बोलना चाहिए, और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे जिंदगी का करियर इनकी टीचिंग से स्टार्ट हुआ था. Even though he started out with his university career, and after his masters he started out with a good 11 years of teaching at Karachi University, and then he changed tracks and he came into education. And thinking about education for Pakistan, not just specific people. And he has been a guide and inspiration to all teachers and students. Abbas, thank you so much from the bottom of my heart for what you've done for me, and I'm sure a lot of people over here are going to say the same thing to you. Coming back to facts, Abbas started TDC in 1997 and has run a master trainer course, which is very, very unique. And many of us over here have, including me, have done that and have become better teachers in every possible way. And again, if you ever have met him and talked to him, you realize that he has a vision for Pakistan. He has a goal for Pakistan, and I would again say thank you so much for developing the soft image of our country in such a positive way. कभी खबर आती है अब्बास साहब इंटीरियर सिंध में जाके पता नहीं कहाँ पे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं. कभी खबर आती है कि अब्बास साहब जो है वो यूएई पहुंच गए भाई. कभी खबर आती है नहीं वो तो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ नाश्ता करके आ गए भाई. और फिर एक दिन खबर आई 2020 में कि भाई उनको तो जी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिलेनियम इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इस्लामाबाद से और डॉक्टर कदीर खान के हाथ से. सो but again I would say it's the man behind all of this that is the gem that connects us all together, and that is the man. I personally met him in 2010 and have always stayed connected somehow or the other with him and his beautiful family. So, Abbas, thank you for what you have given me as a person and Pakistan as so much more, and where many people don't understand the weight of education, the responsibility you have done that for us. Abbas साहब का नाम हमेशा हमेशा एजुकेशन के साथ और पाकिस्तान की एजुकेशन के साथ जुड़ा रहेगा. Thank you, sir. I'm here because of me, or because I am here to represent a much greater man, Shakespeare. 400 years ago. 400 years ago, this man, this genius, 23rd April 1564, 23rd April 1616. So the narrative goes. There are some who say that actually Shakespeare is a gift, the most intelligent export of England to our part of the world. True, we have received many things from the Raj, but Shakespeare is one thing and cricket are the two things we don't quite regret. But then again, there is a scholarship which says, actually, Shakespeare is our gift, India's gift to the British
education system, and that's a surprise. But Gayatri Spivak in her research has pointed out that a gentleman was coming by ship during the East India Company, those days, a big part of history, and he had a whole stack of published Shakespeare plays that were not selling. And so he said, like many of us do in the education system, यार ये किताबें पढ़ी हुई हैं, इन्होंने कर दो ना कोर्स लगा दो ताकि ना बिक जाए. And so it was that Shakespeare's plays were made part of the Indian curriculum, and so it was that Gora Sahab started teaching Shakespeare to Indian children. And then they said, yaar, to bada sutho bana, he's pretty good. He's what our children do. And so it is said that actually Shakespeare is India's gift to English education. This is one of those strange civilizational conversations, handshakes, and therefore Shakespeare's made it is that bridge. My own story with Shakespeare begins with one of my other mentors, the kind of person for whom I would have the same regard, hearty regard, as Nazia has confessed, for me, Dr. Rafat Karim. Thank you. Dr. Rafat Karim was my first teacher in the University of Karachi. I'm talking about 1974. Of course, many of you are not even born then. Talking about a long time ago. And he was the one who, in his opening class on Shakespeare, let's say, ignited all of us. He was the one who said, Shakespeare is not just the poet, the dramatist, the sonneteer, the playwright. Yeah, he was a whole lot of other things as well. Psychologist he was. The one who captured the nuances of human nature, he was. When he turned to law and legal realities, his understanding of legal literacy, when he turned to the issues of finance and money, as we shall see inshallah today, a little bit, he knew. He knew the dynamics of love and its variations. One of the things that I say to my students is that if human love in relationships is to be captured in literature, watch. You want to see what a mother and a son, a mother-son relationship is like? Hamlet. You want to see a husband and a wife know each other's buttons? Macbeth and Lady Macbeth. Those two knew each other extremely well. There is, of course, the dark side, a husband and wife where things go wrong, Othello. And if you want to see a father and a daughter, there's King Lear. If you want to see the relationship between a brother and a sister, there's Measure for Measure. And these are the kinds of nuances and realities that this genius was able to capture and present for us through the ages. In today's program, we will be having a variety of presentations. A program has already been given out. The way it will happen is that I will give a short introduction of the plays. We'll be doing four scenes from four plays: Hamlet, Macbeth, Merchant of Venice, and King Lear. And as we do them, the pattern will be that I will introduce the play a little bit, we will see the presentation, and then I'll give a commentary on what particular greatness has Shakespeare managed in those scenes, in those words. One of the beauties of Shakespeare is also that he is across the globe. That's the name of the program, Shakespeare Across the Globe. And I believe this is truly a marvel that no literary person, literature, master of literature has been able to capture.
Shakespeare has been translated into just about every human language on earth. It is now not possible for one to do a master's in Arabic from Al Azhar University without doing Shakespeare's Hamlet in Arabic. It is amazing. Which means the language of Shakespeare, English, which we will see a little bit of today, somehow his storytelling, his way of capturing the human psyche, his way of capturing the DNA of our humanity, that transcends the language itself. So when we watch the sequences in Sindhi and Urdu, we truly marvel at the global appeal of Shakespeare. Ladies and gentlemen, we turn to our first play, which is Hamlet. By way of introduction, Hamlet seems to be one of every actor's dream. Zia Mohideen Saab, in whose honor and in whose shadow I stand today, much greater man. Zia Mohideen Saab said, "It is a dream of every actor to do Hamlet properly." After a pause of 3 seconds, he then continued, "I have never been able to do him properly." But that was his courtesy and that was his humility. Hamlet. Jacob Bronowski has said that Hamlet has this incredible attraction through the ages because he is a university student. I love this phrase. Because he is a university student. He belongs to that age group where learning is going on, but the burdens of adulthood and the burdens of maturity have not come upon. In that phase, then, every human being resonates. What kind of burden can a young man bear who comes upon the news that his father has been dispatched and that his mother has married too quickly? So when a burden like that comes upon a mind as fresh and pliant and poetic as Hamlet's, you can be sure 400 years later, the music and the beauty of Hamlet resonates in each of our hearts. Without further ado then, my team is ready. We will watch the first opening scene of Hamlet, and then we will see Act 5, Scene 2, Osric, Horatio, and Hamlet discussing. See the presentation straight away, after which I'll be back and take a look at it and give a comment. Thank you very much for your attention. We begin. All the best. Answer me! Stand and unfold yourself. Long live the king! Naro, Hey, you come most carefully upon your hour. it's not so good. Let me back on the store. For this relief, much thanks. This bitter cold. I am sick at heart. Have you had quite bad? Not the mouse stirring. Well, good night. If you do meet Russian martial arts, the rivals of my watch, if they make heads, I think I hear that. Hey! Who's that? Very soon down, and a vigilant to death. Oh, Bernardo, have my best. Have good night. Senator,
तुम्बे मेरा तुम्बे ये अजरी हुआ शय नजर आई है ना ना मुंह कौन लिखी बेज़ात तो चवे तो यो रुको वहम आहे ब भेरा वो असां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे त बि चए थो ये ना आहे तंहिं करे अॼु उन्ही खे पाण सां वठी आयो आहियां असां सां गॾु पहिरे ते रहे जेकॾहिं उन सूरत वरे ॾेखारे भले उन सां ॻाल्हाए पोइ मां नितवार अचे अथई ॾिठो ॾिठो पके तो की न ईंदो ना घरो ॻाल्हि ॿुध जेको असीं पूरो दिन रातिनि खां ॾिठो आहे तो तोखे बयान करे ॿुधायूं अगर वणे एतबार कर न वणे देर कर हाँ लोग बेमन जागानी बुद्धू काल रात जॾहिं उतारो तो कुतब तारे जो औलाद देखो तो जिते हियर बिल्कुल हिते आहे तेरे बारे खां पोइ हिकु लॻो वरी तो अचे बिल्कुल मरून बादशाह जी शक्ल लियो आहे दादर तू घर में मम्मा वाती पाए इन की पे घर आए ला चिकाई माथा ॾिनो ना बिल्कुल उन्हीं जो आए ये बाहर जो भी फर्क कोने घर ते निराश का मुझे तो हवा सी गुम थी वनन था तो उन्हीं मर्दे मानस को गला तू कह रहे जो हिन वक्त रात जो असा जो महरूम बादशाह जी शक्ल ही वेस में आयो आई ते कसम आए तो सच जो भांजे के खफा थियो है जो किसको तो मैंने पूछो बीच गाले उधर वालियो क्या के दिलो यार मेरा नहीं था देखिए थड़की छो तो हां मुंह तो रंग समझ दी होती कितनी देर को बहम है आने का तो तभी ताजी कसम जी अखन का दिसण का सवा कदे भी यकीन ना करे हां ये बादशाह जड़ो ना बिल्कुल बादशाह जड़ो है दाजी कसम जरा भी हुए पहले थे जब शिवरो का बादशाह ता जंग करण में पहल विस चेहरे जी हशमत ही दया भी एड़ी है जो उनके शिकस्त माल दिसण में ते आई हैरत जेड़ी गाल है इन्हीं तरह इन्हीं शक्ल शबाहत में इंसान की भी दुआ गैरा असां जे पहिरे में इन्हीं का सफा निकतो हो इन बाबा दिल में को खास ख्याल करने का मुश्किल है मुझी समझ में तो आई तो अचे तो जरूर असां जे मुल्क में को फरफोट खोड़ुआ को वडो हादसो थियणो आहे आओ हेड़ा कोई आसार ॾिसनि था ना तो जेकर छो रैयत में एतिरी बदगुमानी हुजे ऐं छो अहिड़ो सख़्तु पैर वठण न अचे ॿाहिरि मुल्कनि मां छो हथियारनि जा अंबार पिया अचनि छो किलाबंदी जंग जी तयारी पए थिए बेड़ियुनि जी बेगर पिया हले सिपाहियों के इतनी बंदिश की सख्ती छोटे रात दी सामान गड करन अभी पूरे करने मानो छो मशहूर है भाई से इन्हें जो केड़ा सबब हूं किताब में बताया मारन में यह कुछ कोई हले का किताब किताब जो मदद में छिलाओ हो रहा है तब हम तो यह वही बैठे जंग करने तैयारी हो गए इकट्ठे जामो एक अस्पताल में की भर्ती हो गए इनके सामने चल जाए हम बादशाह तैयारी को करे यार बराबर ही है उसकी बात खाली रूप में आराम नहीं बड़ी जंग की जरा तू क्या होते अबे दुनिया में जंग कटी हुई मानी के मुंह खत क्यों बनी जो ये बात है थोड़ी यार के दिल में डरी खबर बोली तो ओके इन दफा में जरूर होगी ना ये मुझे सावने तवने ही उठगाल ही जो खुदा तो खुदा गलाण बोलण की ताकत नहीं है तो बुधाए जो देर है ऐं छो आयो है ये जेको एड़ो को कम है जे करण में तो का राहत तसल्ली मिलनी हुजे जे करण से असा के को फखर फायदो सवाब मिलनो हुजे ताकि अखियन से करण लाइ तैयार हो
असांजे प्यारे मुल्क में को आफ़त अचणी आहे जे तारण जो कोई इम्कान आहे त जल्दी मुंहिंजी असांखे ख़बर अचे या जेको माल खज़ानो ज़ोर ज़बरदस्ती सां गॾु करे किथे पूरे छॾियो आहे जे ॾिसण जो तोखे इंतज़ार थो रहे इहो बि असांखे साफ़ ॿुधाए ॻाल्हाए कुझु था ॻाल्हाए रोकियोसि रोकियोसि असी गलत था करें एतरी शानदार रूह के सतायूं था भला रूह हवाई शय आहे हवा के असीं कीअं धकड़े सखनी करे सघंदासीं असांजा अजाया धकड़नि फ़क़ति मस्ख़री आहे तूं त हीअ शिरक भराई जेको ॾोहारी जेको पकड़णु अचे ॿुधो आहे त कुकर जी बांग ॾियण त भॼंदा आहिनि जी लाहौर पढ़ण त शैतान भॼे मूं बि रूहनि जी निस्बत में अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि कंहिं ॾींहं ते निकिरंदा आहिनि किन वक़्तनि ते असुल ॿाहिरि न निकिरंदा आहिनि हलो त हैरत जी ॻाल्हि हली हेमलेट खे ॿुधायूं इन रूह असां सां न ॻाल्हायो आहे मूंखे यकीन आहे कि हेमलेट त ज़रूरु ॻाल्हाईंदी असां पंहिंजी दोस्ती जे करे फ़र्ज़ आहे त हैरत जी ॻाल्हि हली मूंखे ॿुधाए ज़रूरु ॿुधाइजसि मूंखे ख़बर आहे त अॼु सुबुह हू असांखे किथे हथींदो That was a magic in English and Sindhi, and I'm sure many of us who have these lines on memory were able to exactly track the sequence. My commentary will be only on the few words with which the scene begins. And I would like us to marvel as a gathering, as a group. I would like us to marvel at how much Shakespeare has been able to pack the meaning of the play in the hands of a few, let's say, unimportant characters whom we will not see again in the rest of the play. Now that is the amazing thing. So the play begins at 12 midnight. He says that it is now struck 12. And there is a changing of the guard. And there is fog. And people are not visible. And the line goes, halt, who's there? Stand and unfold yourself. But that's the whole point of the play, isn't it? Stand and unfold yourself. Isn't that what they are asking the ghost to do? Stand and unfold yourself. People are just simply not visible. There is a huge issue of visibility. People are not what they seem. So then there is this whole theme of madness. Hamlet, who pretends to be mad. Ophelia, who really is mad. There's Claudius, who seems other than what he is. There's Gertrude, who needs to see who the real stand and unfold yourself. It seems to be almost like a motif in the play about the real identities of people, about the real nature of people. There's Polonius, who's hiding behind the Arabs. Who is stand and unfold yourself? Now this stand and unfold yourself is actually also what's the password. And I think one of the most ironic things in the whole play is the choice of the password with which Bernardo introduces himself. Long live the king. Long live the king. But that's the one thing that doesn't happen in Denmark. Hamlet Sr. should have lived longer, but didn't. That's the opening murder plot, starting point. Then we have King Claudius. He's not going to live long. Then we have Hamlet, who in the few minutes between the death of Claudius and the working of the poison in him while he becomes king, long live the king, but the king is not going to live. That I think is one of the most amazing motifs of the play,
that the play is about kings who don't live long. And that is the ironic password chosen for today. Bernardo, you come most carefully upon your hour. You come at the exact time. There is a sense in which the entire story of Hamlet can be read as a story of mistiming. Hamlet says so himself, "O cursed spite, that ever I was born to set it right. That time is out of joint." It seems as if the kingdom has hit a time war, and corruption, sickness, death, something terrible has been unleashed. And that, you come most carefully upon your hour. It is now struck 12. Get thee to bed, Francisco. For this relief much thanks. For 'tis bitter cold, and I am sick at heart. Sickness at the heart. Wow, that is a continuous theme throughout Hamlet as well. Sickness at the heart. Who else? How many people are sick in the play? There is a sickness in the body politic. There is corruption at the level of the king. The whole design, when the kingdom rots, when the king is evil, the kingdom rots. There's something rotten in the state of Denmark. Sickness. Sickness seems to be a theme which Shakespeare has managed to, and as we read the play, we find references to it throughout. And I think one of the most disgusting lines of humanity are in the mouth of Hamlet. If the sun breeds maggots in a dead dog like a god-kissing carrion, have you a daughter? Hamlet, having fun with Polonius, those who are following the scene will know. Yes, my lord, Polonius replies. Hamlet goes, let her not walk in the sun, or else she'll conceive, and conception is a blessing, friend. Look to it. And this disgusting image of human life, which later Hamlet tells us in that marvelous line, what a piece of work is man, we find that all of that has been compressed in the opening 9 lines of the play. That is the kind of greatness Shakespeare had. And this concludes my commentary on Hamlet, which now prepares us for a few words on Macbeth, which is our next item. We know that there are superstitions around Macbeth. There are those who say that if you name the play Macbeth, there's something that goes wrong. And therefore they call it the Scottish play. There is a history of superstition about bad things that happen. It is said that in the very first production of Macbeth, the actor who was supposed to be Lady Macbeth died, and Shakespeare had to worry to get a replacement. So it is said. Much later, due to an accident, the killing of Duncan is by mistake a real killing of the actor. The swords were switched. Some very contemporary moments come to mind. And with that way, people said, let us call it the Scottish play. Let us call it the Bard's play. They would not take the name of Macbeth. But I think that because Napa is a brave place, and we don't worry much about superstition, so we kind of boldly practiced Macbeth by taking the name clearly. And guess what? They put the whole city into chutti. And literally 23rd turned into a place in a way by the reached Napa. And they said, nah, don't you dare take the name of Macbeth. We will not just close Napa, we will close the city. And so, we are celebrating the birthday a whole day later. Truly, the play has some mark on it. Without further ado, and it is my great pleasure to introduce the team which will share with us the opening scene of Macbeth, The Three Witches. Thank you.
तो यहाँ तक तो रहा वो मामला। अब अगली बात बताओ, तुम्हें वो हालात में याद है? भूल कैसे सकता हूँ मुझे? मेरे दिल में एक हलचल मची थी जो मुझे सोने नहीं देती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उस बागी से भी बदतर हूँ जिसे जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। मैं बेचता हूँ और भला हो बेहतरी का कभी-कभी बिना सोचे समझे खतरे में कूद पड़ना वो काम दिखा देता है जो हमारे सोचे समझे मंसूबे नहीं कर पाते। मानना पड़ता है कि कोई गैबी ताकत हमें मुआफिक अंजाम की तरफ रहनुमाई कर ही देती है, चाहे हम कितने भी गलत क्यों ना हो। इसमें क्या शक है? मैं रात की तारीकी में खुद को समंदरी गांव में लपेटे उन लोगों तक पहुंचा जो उस वक्त सो रहे थे। मैंने उनकी जेबों की तलाशी की और वो खत निकाल लिया जिसे लेकर मैं अपने कैबिन में वापस आया। मेरे खौफ ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मैं अखलाक को टच करूं और वो खत खोल लूं जिसमें उनका मंसूबा दर्ज है। और मुझे क्या लगा? बादशाह का मूवी फन साफ साफ हुक्म जिसे मुख्तलिफ दलीलों से जायज करार दिया गया था, ये डेनमार्क की तलाक की खातिर उन्होंने इस्तेमाल की और जिसे मुख्तलिफ दलीलों से जायज करार दिया गया था कि बिना ताकीर और तामुल मेरा सर कलम कर दिया गया। ऐसा हो सकता है? इसे इत्मीनान से पढ़ लेना। अब जानना चाहोगे मैंने क्या रास्ता इख्तियार किया? सुनने को बेकार हूं। खुद को हथियार के भिड़ा पाकर इससे पहले कि मैं अपने दिमाग पर जोर देता उसने खुद ही अपना मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। मैं बैठ गया और एक नया हिदायतनामा मरतब किया जिसे मैंने खालिद सरकारी लिखाई में दूसरे कागज पर मुंतकिल किया। जानना चाहोगे मेरे तहरीर का लफ्ज़ लुभाव? सुनने को बेकार। डेनमार्क के बादशाह की तरफ से इंग्लिस्तान जिसके ज़ेरे तहफ़्फ़ुज़ है, इल्तिमास है कि दोनों मुल्कों की बाहम खैर सगाली के वास्ते, दोनों मुल्कों के अमन के वास्ते और भाईचारे के वास्ते और इस किस्म के बहुत सारे वास्तों के वास्ते, जैसे ही शाही इंग्लिस्तान इस खत को पढ़ ले, इस खत के कासिदों को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए और उनको उनके गुनाहों के एतराफ़ में मज़हबी सहूलत देना दी जाए। इस पर मोहर किस तरह लगे? यहाँ भी आसमान से नजर आ गई। मेरे भड़के में मेरे वालिद साहब की मोहर वाली मौजूदगी थी जो मेरे डेनमार्क की सरकारी मोहर थी। मैंने आपको पहले वाले खत की तरह तय किया, उस पर दस्तखत किए, मोहर लगाई और उसको बाहिफाजत उसी जगह पर रखाया जहाँ से मैंने उसे उठाया। और उसके दूसरे ही रोज हमारी समझ की लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद तुम्हें मालूम है कि क्या हुआ। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन और रोलिंग मर चुके हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने खुद ही साजिश में बढ़कर का हिस्सा लिया। मेरे ज़मीन पर उनकी मौत का कोई बोझ नहीं। जब कोई गोना दो कदावर दुश्मनों की तलवारबाजी के दरमियान आता है तो उसका यही अंजाम होता है। ये कैसा बादशाह? तो बताओ क्या ये मेरा हक नहीं जिसने मेरे बादशाह को मार दिया, मेरी माँ को रंडी बना दिया, मेरे वली अहद और तख्त के दरमियान रखा हुआ, मेरी जिंदगी पर इस अय्यारी के साथ वार किया। इंसाफ ना होगा कि मेरी बातों को उससे बदला भी? तो क्या ये बेगैरती ना होगी कि एक नासूक मजीद फैलने से रोका ना जाए? जल्द हिंदुस्तान से खबर मिल जाएगी कि उनके पैगाम का क्या नतीजा है। ये बहुत जल्द हो, लेकिन ये जो बीच का वक्फा है यही मेरा। एक इंसान की जिंदगी तो एक दिन से पहले ही खत्म हो सकती है। ये कौन आ रहा है? हुजूर मुअज़्ज़म के डेनमार्क वापसी जय नसीब। बहुत शुक्रिया जनाब। तुम इस कीड़े को जानते हो? जी नहीं। फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि इसे जानना भी बहुत खतरनाक है। ये बहुत सारी जायदाद का मालिक है। कीड़े को कीड़ों का बादशाह बना दो तो शाही क़ुआम की मेज पर उसकी जगह बन जाती है। ये हकीर है लेकिन बहुत सारी मिट्टी का मालिक है। हुजूर अगर इजाजत दे तो बादशाह मुअज़्ज़म का एक पैगाम गोशगुजार करूं। मैं तो इजाजत से सुनूंगा, लेकिन जनाब टोपी को सही जगह पर रख लीजिए, ये सर के लिए होगी। हुजूर का शुक्रिया। गर्मी बहुत है। यकीन कीजिए बहुत सर्दी है, हवा शुमाली है। जी कुछ सर्दी तो है हुजूर, बेशक, लेकिन गर्मी और रुतूबत मेरे रंग और रूप के लिए ठीक
ठीक नहीं रहेगी। क्यों? रुतूबत तो बहुत ज्यादा है हुजूर। हुजूर मेरे मालिक, बादशाह आजम ने यह कहने को कहा है कि उन्होंने आपके भरोसे एक बड़ी शर्त लगा रखी है। बात असल में यह है कि इशारा किया आपकी टोपी। नहीं हुजूर, मुझे यही मुनासिब लगता है। तो मैं कह रहा था कि हुजूर, लेयर्टीज नया नया दरबार में आया है। यकीन जाने सर से पैर तक खानदानी नौजवान है, फनून में माहिर, नर्म गुफ्तार और बलागा सजीला। दिल की बात कहूं तो अशराफिया की आंखों का तारा है। एक मौजे शख्स में आप जो कुछ देखना चाहें उसमें मौजूद है। जनाब, उसकी खूबियां आपकी मलासराई से बेनियाज है। अगर उसकी खूबियां गिनने बैठे तो हिसाब कमजोर पड़ जाएगा। और अगर हाँ सच्ची बात कहूं तो बस यही कहूंगा कि उसकी खूबियां इतनी बेमिसाल और कामयाब है कि उसको अपना साजिश सिर्फ आईने में ही दिखता होगा और कहीं नहीं। हुजूर ने क्या सही नक्शा खींचा है। लेकिन जनाब, सवाल तो ये है कि हम अपनी चिकनी जबानों से उसकी तारीफों के पुल क्यों बांध रहे हैं? हुजूर, आप ये ज़बान समझ नहीं पा रहे। हालांकि बोलते तो बहुत रवानी से, फिर से कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ उस शख्स का तस्करा किस जरूरत के तहत हो रहा है? लेयर्टीज का? अब इस शख्स का बटवा खाली, तमाम सुनहरे अल्फाज तो पहले ही खर्च हो गए। जी हाँ, उसी की बात हो रही। मैं जानता हूँ कि काश आप जानते कि मैं क्या जानता हूँ। हुजूर जानते हैं कि लेयर्टीज किस उसको जानने का दावा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जानने का दावा उसको बाइक आदमी नहीं कर सकता। किसी को पूरी तरह जानने का मतलब है उसको भी जान ले। हथियारों के फन में जनाब, माहिर फन कहते हैं कि उसका कोई सानी नहीं। अच्छा, क्या हथियार है? खंजर और तलवार। ये तो सिर्फ दो है, मगर चले खैर। बादशाह ने 2 बारबरी घोड़ों की शर्त लगाई है, जिसके मुकाबले में उसने 6 फ्रांसीसी तलवारें और खंजर दांव पर लगाए हैं, तमाम लवाजमात के साथ। उनमें से 3 सवारियां बहुत खूबसूरत हैं, जिन पर बड़ा नाजुक काम बना हुआ है, तलवारों के दस्तों के ऐन मुआफिक। 2 बारबरी घोड़े बमुकाबला 6 फ्रांसीसी तलवारों के। ये तो यूं लग रहा है कि डेनमार्क का मुकाबला फ्रांस से हो रहा है, लेकिन मुकाबला हो भी सूची में रहा। बादशाह ने शर्त लगाई है कि 12 वार में से 3 से ज्यादा वार वहां पर नहीं कर सकेगा, और आप 9 वार से फतहमंद होंगे। 3 और 9 का मुकाबला है। अगर आप इजाजत दे दे तो अभी फैसला हो जाए। अगर मैं इनकार कर दूं? मेरा मतलब है हुजूर की मुकाबले के लिए रजामंदी। जनाब, अभी तो मैं अपने कमरे में टहलना चाहता हूँ। अगर बादशाह पर एतराज ना हो तो ये मेरी हवा खोली का वक्त है। तलवारें निकलवाई है, और अगर वो शख्स तैयार है और बादशाह की जवान दांव पर लगी है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि बादशाह का सर ऊंचा है। और अगर हाँ नहीं कर पाया तो बस थोड़ी सी बदनामी मिलेगी और कुछ तो मैं ये जवाब पहुंचा दूं? जी हाँ, यही जवाब। और हाँ, अगर इसमें कुछ गिरने लगाना चाहे तो लगा लीजिएगा। मैं हुजूर का ताबेदार हूं। गनीमत है कि ताबेदार है और कुछ नहीं। हमारे खुशी के भागता हुआ जा रहा है सारा आसमान। ये पहला ही बेवकूफ है। ये दूध के साथ बेवकूफी पिलाई गई है। ये सिर्फ वक्त का धारा पहचानना आता है जिससे दरबार की कोई चीज फर्क लेते हैं। इन पर जरा सख्ती करके देखो, सब कुछ उगल जाएगी। When Sir Lawrence Olivier did his production on Hamlet, somehow my feeling at the time when I first saw it, that was about 40 years ago. Lawrence Olivier was 25 years old, it is said, when he did Hamlet. They asked him, when are you going to do King Lear? In the play, Lear is 80. But Lawrence Olivier said, when I'll be 75. And he did at the age of 75. Lawrence Olivier gave an interpretation of Hamlet in the opening scenes. Even before the play began, he gave us a twist to the entire viewing. It's available on YouTube. The story of a man who could not make up his mind. And I believe that is a categorical error, because we just saw in Act 5, Scene 2, Hamlet kept incredibly swift in taking decisions and making up his mind. Deciding what to do with Rosencrantz and Guildenstern, deciding what to do
about the king deciding what to do about the play. Throughout the play, it turns out Hamlet is not someone who cannot make up his mind, but the one who does so. It's a completely different interpretation. And without further ado, I understand some of my remarks on Macbeth have been said already. There it goes. See, naming the play is a problem. We begin, I now invite which is the opening scene of Macbeth.
thunder, lightning, or in rain. The entire play is foreshadowed in these two lines. It seems as if the witches in the opening two lines are saying a choice. Think carefully. When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in wind? They are not three separate things, they are the same. They happen at the same time. So what appears to be as a choice is not actually a choice. This is the plasticity of language that the witches have. And we saw a brilliant demonstration of that in the community. The play is a profound study on what exactly do words mean. How is meaning lost? How is meaning constructed? What does it mean when a being, a witch, who says that no man of woman born, Macbeth, you will not fear a man or woman born, and Macbeth takes that to mean something else. It is this construction, reconstruction, it is this double meaning, it is this that destroys Macbeth and his life and all that he wishes. One extremely powerful thought that my students sometimes ask me, how is it that a man who commits a murder in his own home of a guest, of his king, of his uncle, is still resonating with us today? Why should we bother? Why don't we just say, that criminal, who wants to see? And yet the fascination of Macbeth doesn't end. We know there is a presentation, there is a production of Denzel Washington just last year, which in black and white, shades of grey, is one of the most remarkable, those who have seen it would know. What is this fascination? Perhaps one answer, one very humble answer, is this. Macbeth tells us, what is it like to walk to hell with both eyes open? He knows exactly what good and evil are. Had he been a morally blind or a morally bereft person, he would have had no sympathy. But Macbeth knows exactly what good is and what evil is, and then he chooses it. And in that choice, both Macbeth and Lady Macbeth show us the incredible human propensity. How many times in our lives have we known what we ought to do but didn't do it? How many times have we known the nobler path to take but didn't take it? The true word to speak but didn't speak it? The voice to raise at the moment but didn't raise? That, to me, is, in summary, the fascination of Macbeth today. This concludes my remarks on Macbeth. We now turn to our third, The Merchant of Venice. Now, The Merchant of Venice is, has been said very often, a play of two cities. There is Paris, Belmont, and Venice. There is Venice, which is said to be the real world of dealings and Shylock and money and commerce and mercantile, etc., etc. And then there is Belmont, the fantasy world. There is Portia, there is her father, there is the casket, and then there are all these magical, strange things to which Portia is bound. And in these two places, we have Bassanio coming and going, and in that process, the play's tensions are built. We are going to watch the Bond scene, and in that, I'm not going to preempt it, but I do want you to watch. There is Shylock, Bassanio, and Antonio making the deal. And here is the real world. Let us see. Thank you. 3,000 buckets, 3,000 सिक्के, अच्छा
हाँ, सिर्फ 3 महीनों की। 3 महीनों के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि तुम्हें मेरी जमानत देगा। तुम्हें जमानत देगा? अच्छा, क्या आप मुझ पर ये एहसान करेंगे, मेरी मदद करेंगे आप? 3000 डकेट, 3000 सिक्के और 3 माह के लिए एंटोनियो की जमानत पर। आप बताया आदमी तो अच्छा है तो। आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी तो किरदार को दागदार कर सके? ऐसा नहीं है। मैं जब भी से अच्छा आदमी कहता हूँ तो मुझे सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैं उसे पूरी तरह इस काबिल मानता हूँ, लेकिन उसकी दौलत जान नहीं। उसका दौलत में होना तो एक अंदाजे की बात है। उसका एक जहाज ट्रैकोलिस जा रहा है, दूसरा इंडीज की तरफ चल रहा है, और बाजार में मुझे खबर मिली है कि उसका तीसरा जहाज मेक्सिको जाएगा और चौथा इंग्लैंड को। इसी तरह उसके सारे जहाज दुनिया में अलग अलग समुद्रों में जा रहे हैं। जहाज तो काट रहे हैं और उन पर समुद्र में हर तरह का खतरा आ सकता है, और जहाज में सिर्फ इंसान ही होते हैं जो समुद्र के खौफनाक तूफानों में मर सकते हैं। इसके अलावा नजारों से तो बड़ा डर है समुद्र, और भी कई आफतों का सामना करना पड़ता है जहाजों को। तूफान है, लहरें हैं, चट्टानें हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बावजूद इनके एंटोनियो जमानत बनने की पूरी तरह काबिल है। 3000 डकेट चाहते हो? ठीक है, मैं मान लूंगा अगर वो जिम्मेदारी उठा लेगा। आप उसकी तरफ से बेइज्जत कर रहे हैं। तुम कहते हो तो मुताबिक हो जाता, लेकिन मेरी दिल से नहीं होनी चाहिए, और यही मुनासिब होगा कि मैं एंटोनियो से इस बारे में सीधी बात करूं। ठीक है, तो आज आप हमारे साथ खाना खाएं ताकि मैं सूअर के गोश्त को सूंघ सकूं, जिसमें तुम्हारे पैगंबर ईसा मसीह ने शैतान की रूह को दाखिल किया है। मैं तुम्हारे साथ खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ आ नहीं सकता, ना ही तुम्हारे साथ पी सकता। बाजार से कहेगा ये कौन आ रहा है? ये तो इज्जत का एंटोनियो है। ना भला भला सीधा साधा लगता है ये, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूं क्योंकि ये ईसाई है। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा इससे नफरत इसलिए है क्योंकि ये मुनकसर मिजाज सूरत हिमाकत के बाद अपना सूद के रुपया दे देता है, और वेनिस में हमारे सूद की शरह को यूं ही गिरा देता है। एक बार ये मेरी पकड़ में आ जाए तो मैं इससे अपनी पुरानी दुश्मनी का सारा इंतकाम ले लूंगा, जो ना जाने कब से मेरे दिल में पड़ रहा है। ये मेरे पाक यहूदी मजहब से नफरत करता है, मेरी पाक कौम से नफरत करता है, और जब तुम सारे ताजिर इकट्ठे हो मुझे सबके सामने डांट देता है। ये मेरे कारोबार की बुराई करता है, और ईमानदारी से कमाए मेरे मुनाफों को सूद और गुनाह की कमाई कहता है। अगर मैं इसे मुआफ कर दूं तो खुदा का अज़ाब नाज़िल हो मेरी कौम पर। आप इतने चुप क्यों जा रहे हो? मैं इस वक्त मन ही मन में मौजूद दौलत का हिसाब लगा रहा था, और जहां तक मैं समझता हूं मैं भी ऐसी हालत में नहीं हूं कि तुम्हें 3000 डकेट दे सकूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आली जनाब कहिए, अच्छे तो है, हम अभी अभी आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। शायद हालांकि मेरा कॉल रहा है कि ना मैं रुपया उधार लेता हूँ ना देता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं एक उसूल तोड़ता हूँ। तुमने बता दिया है कितनी जरूरत? 3000 डकेट, सिर्फ 3 माह। ओह 3 माह के लिए बताया था, तो मैं भूल गया। ठीक है, तुम जमानत दो, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, लेकिन सुनो, तुमने कहा था कि तुम ना उधार सूद पे लेते हो ना देते हो। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से याकूब अपने चचा लबान की भेड़ें चराते थे, और जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जानशीनी का मामला अलग हो गया,
जानशीन होना था इसहाक के बड़े बेटे ईसाऊ को, लेकिन जानशीन मिली छोटे बेटे याकूब को, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसी अय्यारी की कि ईसाऊ की जगह याकूब ने। हजरत याकूब की बात नहीं करते, वो भी सूद लिया करते, वो सूद नहीं लेते, ऐसा सूद नहीं लेते थे जिसे आजकल सूद कहा जाता है। देखो याकूब के मामले में तो कुछ किस्मत का जोर ही समझना चाहिए, लेकिन तुम क्या मुकद्दस आयात की मिसाल इसलिए देते हो ताकि अपने सूद देने की ख्वाहिश को सही साबित कर सको। देखते हो बसानी इस तरह एक शैतान भी अपने फायदे के लिए मुकद्दस आयात की मिसाल लेता है। जो शख्स अपने फायदे के लिए मुकद्दस आयात की मिसाल ले, वो जलील की तरह है जो ऊपर से तो हंसता है लेकिन अंदर से भयानक। बुराई भी अपने ऊपर कितनी खूबसूरती लपेट कर आती है। 3000 डकेट्स बड़ी रकम है, 12 में से 3 मार लिए, सूद की शरह जोड़ने दोनों के जाएंगे। शायलोक तुम ये रकम दोगे? एंटोनियो, तुम कई बार बड़े बाजार में मेरी तौहीन कर चुके हो, सूद लेता है, बेईमानी करता, लेकिन मैंने सब्र तामुल से सारी तौहीन को बर्दाश्त किया है, क्योंकि सब्र बर्दाश्त की कुव्वत हमारे कौम की एक खूबी है। तुम मुझे ईसाई मजहब न मानने के बायस यहूदी जानकर लामज़हब कैसे? तुमने मुझे कठिना कुत्ता कहा है, मेरे यहूदी मजहब के इजहार करने वाले शोभे का मजाक उड़ाया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी दौलत कमाई है। और आज तुम आए हो कहते हो शायद हमें दौलत चाहिए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आ रही है। तुमने मेरे मुंह पर थूका था, तुम्हारी नजर में तो मैं सड़क के दोगले कुत्ते से ही गैर उतरा था जिसको लात लगाने के लिए तो हम मसला करता था तुम्हारा। क्या जवाब तुम बोलो? हाँ, ये कह दूं कि एक कुत्ते के पास दौलत होती है, या ये हो सकता है कि एक कुत्ता 3000 रुपये उधार दे, या कहो तो झुक जाओ गुलामों की तरह कभी आता कांपता लाचार भागता हुआ कहूंगे आगे जनाब फुला दिन आपने मेरे मुंह पर थूका था, एक और दिन आपने मुझे कुत्ता कहा था, और फुला दिन आपने मुझ पर लातान की थी, और इन तमाम नवासिशात के बदले में मैं आपकी खिदमत में 3000 पैकेट पेश करता हूँ। मैं तो आगे भी ऐसा ही तुम्हारे मुंह पर थूकूंगा, तुम्हें लात मारूंगा, तुम्हें सारे बाजार जलील करूंगा, तुम्हें कटखना कुत्ता भी करूंगा। तुम दोस्त में चल क्यों गए? दुश्मन समझ सारे बाजार बिना शर्त के सजा दिलवा देना अगर तुम्हारी रकम सही वक्त तक मिला लो। बिलाल जी अपना काफी दिखा रहे तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता, तुमने जो मेरी तौहीन की है उस सबको भूल जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा और कोई सूद भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मेरी ये बात कितनी रहम दिलाना है ना? अगर ये सच है तो ये यकीनन रहम दिलाना है। ये रहम तो मेरा यकीन समझ। एक काम करो, वकील के पास जाओ, कागज लिखो और उस पर दस्तखत करो, लेकिन सुनो, महज अज़राए मजाक उसमें एक बात शामिल कर देना कि अगर इसने ठीक वक्त पर रुपया वापस नहीं किया तो मुझे पूरा इख्तियार होगा कि इसके जिस्म से कहीं से भी हाथ से गोश्त काटकर निकाल। मुझे मंजूर है, मैं दस्तखत नामे दस्तखत करने को तैयार नहीं, लेकिन मैं आपको दस्तखत नहीं करने दूंगा, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि मेरी जरूरत ही पूरी ना हो और मेरे काम बिगड़ जाए। तुम डरते क्यों हो? मैं जुर्माना नहीं दूंगा, जितनी रकम मुझसे दे रहे हैं तो कई जगह मेरे जहाज 2 माह में ले आएंगे, मैं आपकी मां मिले। ए मुक़द्दस बुजुर्ग बरतर इब्राहिम, ये ईसाई भी कितने अजीब होते हैं, ये दूसरों के लिए इतने सख्त वीर और बेरहम होते हैं कि इनको भी अपने जैसा समझते हैं। सुनो, अगर इसने ठीक वक्त पर रुपया वापस नहीं किया तो इसके जिस्म से आपको गोश्त काटकर करूंगा क्या? इंसान का गोश्त ना तो कोई कीमत रखता है, ना ही फायदेमंद है, वो कोई गाय और बकरे का गोश्त तो है नहीं। मैं तो उनकी मुखलिसाना दोस्ती को जीतने की खातिर ऐसा करता हूँ। मेरा हाथ बढ़ा हुआ है, थामना है थाम लो, नहीं तो जाने दो, लेकिन बराए करम मुझे नुकसान न पहुंचाओ, मेरी नेकी की तस्लीम करो। इनको मैं दस्तखत करने को तैयार। ठीक है, वकील के घर पहुंचो, मैं रुपया लेकर सीधा हो आता हूँ फौरन। रहने यहूदी मेरा जल्दी करना,
सेवकी ने कमाल की मेमोरी दिखाई, ये देखने की इच्छा नहीं होती। जब मैं किसी कच बातिन शख्स से मीठे बोल सुनता हूँ तो मुझे कुछ शक सा होने लगता है। तुम घबराओ मत, चलो वकील के यहाँ चलो। Fantastic. It's a good word. It comes from the word fantasy. When we say in praise about something, oh, that's fantastic. One of the meanings and implications is, it can't be real, it is fantasy. So the play is a tension between Venice and Belmont, and we said that these two places are places, real world and fantasy. And yet this is the mastery of Shakespeare. What you've just seen in the Bond scene is fantasy itself. We have seen Shylock make a legal demand right here in the opening, which when in the court scene, Portia explodes the 4 legal errors. 3 are extremely obvious, but when she says the 4th one, the whole audience heaves a sigh of relief and realizes, Antonio will be saved at last. And that is the whole fantasy element of this. That the 4th fallacy is exactly the very first one. Let's take a look. The first one is rejection of mercy. The quality of mercy is not Shakespeare's. Portia appeals to the Jew's sense of mercy at a moment of law. Number 2, she then says, all right, take the amount, take the money 3 times, take it. Now there's no problem. And he refuses, he wants nothing but the bond. 3, then she says, all right, you want the bond, you want the pound of flesh, not a drop of blood, not a muscle, not a fiber more than a pound of flesh will you take. Now these 3 were obvious to anybody who was paying attention, but suddenly Portia says the 4th thing. And the 4th thing is, as an alien, you decided to attack a Venetian, and because you went against the law, going against the life of a Venetian, your property and everything is confiscated, and the whole audience goes, wow, wonderful. But there, friends, this is it. The real world of Venice had in it, at the heart, right at the center, a fantastic element. The whole Bond story was entirely fantasy. And then we think of the real world in Belmont. Well, imagine what an intelligent father Portia's father must have been. He allowed her to learn the law and get a law degree. And yet, he decided on the caskets, knowing that only the right man will choose the correct casket. So we find, even as we decide that the play is real world and fantasy, we find a fantastic element in Venice and a very real element in Belmont. Thank you. This concludes my remarks on Merchant of Venice. We turn to the last few minutes of King Lear, that's a few minutes of this presentation and the opening scene of King Lear. It would have been wonderful to have done the whole scene, so let me prepare you for a little of an anticlimax. We will see the opening of King Lear. Lear is a kind of a masterpiece, is a kind of a tragedy. Somebody has said, there is no such thing as Shakespearean tragedy. There are only Shakespeare's tragedies. And F.R. Lewis, in one of his essays, has said, each tragedy is an assault, a fresh assault on our understanding of good and evil. King Lear is a masterpiece, but how it is and what kinds of ways it is will make sense after we've seen the opening. Thank you very much. King Lear.
मेरा ख्याल है कि बादशाह एलिजाबेथ के मुकाबले में कॉर्नवॉल के शहर पर ज्यादा मेहमान है। हाँ, लगता तो सबको यही था। लेकिन जब से सल्तनत के टुकड़े हुए हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन किस पर भारी है। दोनों के हिस्से इतने बराबर हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किससे बेहतर है। ये आपका लगता है? हाँ, बीज तो मैंने ही बोया था। और अब इसे बेटा कहने में जरा विपत्ति महसूस होती है। तो आदत हो गई। आप कुछ समझ में नहीं है। आज जरा मेरे भी कुछ देर नहीं समझ में आई। वो ऐसा है कि जब इसकी माँ के पाँव भारी होने लगे, यानी जब उसको हमल ठहरा, तो पलंग में शौहर के आने से पहले पालने में बच्चा। अब जरा कुछ गड़बड़ समझ में आई। अगर उस गड़बड़ का नतीजा इतना शानदार निकला है तो क्या खूब गड़बड़ रही होगी। यार, एक और बेटा भी है, उससे 1 साल बड़ा, लेकिन मैं दोनों में कभी कोई फर्क नहीं रखा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि भाई इसकी माँ थी बहुत हसीन। लज्जतों का जाया है ये तो हमें हराम। तुम्हारी आपसे मुलाकात है? जी नहीं जनाब। आप कैंट के वाली हैं और मेरे अजीज दोस्त हैं, याद रखना। अंदर खिदमत के लिए हाजिर। जीते रहो, मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे इस काबिल बन सके। 9 सालों से बाहर मुल्कों में शिकायत करता रहा है, अब फिर से जाने वाला है। और लगता बादशाह है। It would have been wonderful to then actually have the king here, and then to see the test, and then to hear the protestations of Ronald Reagan and Cornelius. But then that would have kept us for the rest of the evening. Yeah, and these are my closing interpretation. What I'm going to do is actually offer you a kind of a surprise. The opening 2 lines of King Lear, scene 1, the opening 2 lines, somehow put, for those of us who are paying attention, make us rethink just about everything we've heard about King Lear and what happens in King Lear. Coleridge, a remarkable reader of Shakespeare, has said, remove the first scene and the rest of the play would be fine. No. Sorry, Coleridge sir. No. The first scene is what sets. Bradley tells us the first scene. You can't just take it out. Shakespeare is writing at the height of his powers, and nobody less than Shakespeare can tell him how to write a better play. So that is not the issue. But let's see. For over 300 years, and many people present in the room would consider King Lear, the king, to be a vain, foolish, flattering person who likes flatterers and who is about to take a decision of the division of the kingdom, and he is about to do so in the most foolhardy way he can. He calls his 3 daughters and he tells them, okay, tell me which one of you loves me most. And the first daughter says something and he says, yay, here's your part. The second daughter says another bit of hocus. And being King Lear, stupid, 80 years old, the nice Urdu word is Satya gaya hai, but I don't know what 80 years old.
He's gone bonkers. He said, aha, great, Regan, here's your share. And he turns to Cordelia, the daughter he loved the most of all, and she speaks the truth, inverted commas, truth, nothing, etc. And that begins the whole tragedy. I would like us, today's conversation, I would like us today to rethink this entire interpretation. And I think it is challenged by Shakespeare's text and is challenged by the opening two lines, the opening two sentences by Kent and Gloucester. Kent, I thought the king had affected the Duke of Albany more than Cornwall. Gloucester, it did always seem so to us. But now in the division of the kingdom, it appears not which of the dukes he values most, for equalities are so weighed that curiosity in neither can make choice of either's moiety. Moiety is an old word for share. What are these two gentlemen talking about? They are King Lear's most closest confidants and friends. They are those who are his coaches. They are his main people. And they are talking about the shares of Albany and Cornwall. And Kent is saying, I thought that the king liked Albany more than Cornwall, and therefore his share would be better. And Gloucester said, no. The shares are so equal that neither would choose the other's share, meaning they are so good. Just a moment. The love test hasn't happened. The question hasn't been asked. All that flattery hasn't happened. They already know the shares. Now, this suddenly makes us pull the carpet from under our kind of misreading of King Lear and ask some very, very serious questions. Here is, because one of my occupational hazards is long lectures. So I know that we can go on, but I will not. I am only giving you a highly provocative interpretation which is based in the text of Shakespeare himself to turn this round. No, my friends, no, this is not what's happening. King Lear is taking the most intelligent decision of his life. The most intelligent decision of a king is not the foundation of a kingdom, but the maintenance of one. That's a deep thought. In all of Shakespeare, Lear is the most successful king because he's been able to maintain his kingdom for the longest possible time without any disruptions. And he wants, as he says in his opening speech, future strife may be prevented now. He has taken the most powerful decision. Because there's one thing he cannot postpone, his own demise, his own death. That he cannot postpone forever. And he never was going to stay with the other daughters in turns. He was going to stay with Cordelia throughout. Which means we need to ask some very serious questions about what is happening in the first scene and what has happened the evening before. And all this is evidence from the text. King Lear has decided that he cannot postpone his own dying, but he has to take a decision about the dowries of his daughters, the elder two. And King Lear के बारे में आप जो चाहें कह दीजिए, एक बात तो है ना, मर्दम शनास. He knows the qualities of people. He knows who to keep as courtiers. Exactly. How do you think? Do you think that King Lear doesn't know the evil nature of his two daughters, Gondrel and Regan? Of course he does. But he has to take a decision such that they will take it and be unable to oppose it. Here is, in brief, if those of you have seen the presentation, the productions, Lear says, give me the map here. And the map is brought out. Now, okay, there's a flaw right there even when the love test begins. Imagine if the divisions of the kingdom was to be based on the protestations of love by all three daughters, what should have actually happened? Lear should have said, Gondrel, our eldest, speak first. Gondrel should have spoken, and then he should have said, all right, that's good.
Regan, your turn. Cordelia, your turn. Oh, okay. Yes, you spoke the... But remember, he has actually, such is his astute wisdom that, yes, of course, such is his astute wisdom that he has decided to make Goneril, his evil daughter, accept the part that he has decided without any protest at all. That is the cleverness. Tell us, our eldest, how much do you love me? And then Goneril is actually taken totally by surprise. She actually would like to say, I hate your guts, but she can't say that. So she starts fumbling, dearer than eyesight. What? Rich or rare? She's actually caught short. But in that, Lear has achieved his purpose. Aha, you love me so much. Okay, here's your share. Now imagine, friends, if I have to decide something to be divided into three, and I give the northernmost portion to Albany and give the southernmost portion to Cornwall, I have already made sure that the borders of the two sisters don't match. Therefore, their military arrangements cannot combine against Cordelia. And I know that I'm going to give the best to Cordelia already. Here's the biggest thing which people don't notice, at least many people I have met don't notice, and all the YouTube summaries of King Lear on 7 minutes haven't noticed. If I'm going to decide to divide something into three, and I have already given part 1, and I have already given part 2, does it matter what Cordelia says to get part 3? No, it doesn't. And that was the whole play as in his ploy, where Cordelia's speaking of the truth turns the tables round and alters the whole plan. And then the whole thing unravels. And the greatness of that King Lear cannot, before open court, with the King of France around, with Burgundy around, with Albany and Cornwall and the whole court around, say to almost everybody, it was all a fake, it was all a jest. I was only doing this to do the best I could do for my dearest daughter. And she has made me reveal the fact that it was all a ploy. And this, as a king, is the beginning of his journey of becoming human, becoming a better human being. And that begins the plan. So I have offered you, I have offered you a radically different look at what happens in the first scene of King Lear. I invite you to read the text, and perhaps again on some other evening, away from April 23rd and 24th, we can meet again and discuss these things. Ladies and gentlemen, it has been an august pleasure to welcome all of you, to enjoy, to watch, to think, and to remember 400 years ago this man gave us a legacy that still enthralls, still inspires, still makes us excited. I would like to call all my honorable artists to come on the stage for a combined bow with everyone. Please come. Ladies and gentlemen, to the Napa management, Junaid Zubairi, though he is not in town, but I believe he is on his way to town. To all my colleagues, to the librarian, Zen, to the stage managers, to Kamal Saab who did the makeup, to all the people who did the lights, the stage design, my gratitude and my thanks for this honor and privilege, and to all of us who have given us this delightful hour of looking at some of the best writing in the world. Thank you very much. The book exhibition outside is just one remark. I have been able to get hold of Shakespeare's first folio. No, not the original first folio. That's only $4.5 million. I'm a very poor man.
So I have the facsimile of the first folio of the British Library. It is on a separate table by itself, and in a sense it is slightly better than the original first folio. For that I cannot touch because it is going to go brittle. This one, well, okay, don't touch it, just do this photo to the. And along with that, some books from my library of Shakespeare's works. Thank you very much. I will be